Good evening, children. So, children, yesterday we were talking about local self-government, that is rural, and I'm going to continue that chapter now. And children, if you are having doubt at any point, then you should mention me. Sir, you should type me the message. And after that, whenever I teach you the topic, I'll ask you yes or no, then you should respond. Now, let's move to the topic. Yesterday we have started with the local self-government. I have told you the definition. See, if I talk about local self-government, there are two levels. One is the rural local self-government and other is the urban local self-government. So initially we are going to do the rural local self-government. The rural local self-government can be divided into three parts. Village Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block level, Jila Parishad at the district level. Three levels are there: village, Panchayat and the Jila Parishad. So now let's talk about the rural local self-government. See children, yesterday whatever I have taught you, I am just revising it. The Balwant Rai Mehta Committee of 1957 recommended a three-tier system of rural local self-government, which is Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block level and the Jila Parishad at the district level. After that, the Panchayati Raj Act of 1993 helps states to set up rural government. Now, it clarifies that states having a population up to 20 lakh need not set up the middle tier of the three-tier system. Now, let's talk about. See, today I am going to start with the Panchayat Samiti. Now, as you know that this Panchayat Samiti is at the block level. The Panchayat Samiti is at the block level. See, the self-governing institutions at the block level is known as the Panchayat Samiti. It is the second tier in the Panchayati Raj system of the rural government in India. It is the Panchayat of Panchayats, Panchayaton ki Panchayat. It covers 50 to 100 Panchayats, 50 से करीब 100 Panchayats को cover करती है within a particular area. That is why it is sometimes termed as an area panchayat और कई बार इसे हम area पंचायत के नाम से भी बोलते हैं. In some states it is called the प्रखंड पंचायत. अच्छा, कुछ राज्यों में it is known by the name of प्रखंड. प्रखंड means large, पंचायत और सर्कल पंचायत और तालुका पंचायत. Different states, different names. But the most common one is the Panchayat Samiti. Now, अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें, if I talk about the composition, so it consists of the following members. The first one, the sarpanches of all the panchayats within the area. उस ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, उनके जितने भी सरपंच हैं, वो सब इसके मेंबर रहेंगे. अच्छा, उस एरिया के जितने भी MP, MLA, MLC, all the MPs, MLAs and the MLCs of the block, all members of the block who are elected to the Jila Parishad, the chairperson of the town area committee and the notified area committee. ध्यान रखना, जो चेयरपर्सन होता है टाउन एरिया कमेटी का और नोटिफाइड एरिया कमेटी का, जो उस ब्लॉक में आते हैं. The BDO and SDO. BDO stands for Block Development
officer, the BDO and SDO panchayats of the blocks concerned, president of the primary cooperative marketing society. Remember the word president of the primary cooperative marketing society in the block. देखो हर ब्लॉक समिति जो होती है इसकी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं. एवरी ब्लॉक समिति हैज सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन मेंबर्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इसके अलावा और भी ऑफिस बेयरर्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मोर ऑफिस बेयरर्स. जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर who is assisted by assistants who are experts in the fields of agriculture, land development, cooperative farming, etc. अब हम लोग बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मेन फंक्शंस. देखो जो फंक्शंस होते हैं पंचायत समिति के, द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति आर, सबसे पहले सिविक एमिनिटीज, सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. सिविक फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, दीज इंक्लूड द फॉलोइंग. पहला, टू रन अ रूरल हेल्थ प्रोग्राम एंड टू सेट अप अ प्राइमरी कम्युनिटी health centers to provide medical care to the villagers in the block. After this, to provide rural water supply for drinking purposes. To develop and maintain rural roads linking villages with each other and the towns. मतलब जो आसपास के जितने भी गांव होते हैं उन सबको सड़कें जोड़ती हैं और वहाँ से जो भी टाउन पड़ता है, कस्बा पड़ता है, उसको यहाँ की सड़कें उससे मिला देती हैं. To provide improved seeds, fertilizers, pesticides and implements. It also looks after the quality breed of the cattle. ध्यान देना, जो जानवरों को जो चारा दिया जाता है, जानवरों को जो भोजन दिया जाता है, उसको भी चेक किया जाता है. वो भी हमें पंचायत समिति से मिलता है. टू डेवलप हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी and other cottage industries and to provide to youth job opportunities and to check rural unemployment. और इसके साथ साथ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी चेक किया जाता है. Unemployment means the people those who are not having the job. Okay, to promote the welfare, सबसे important point, to promote the welfare of the scheduled castes or scheduled tribes, to work for the improvement in the status of the women. महिलाओं के तरक्की के लिए काफ़ी ध्यान दिया जाता है. ना इसके बाद इसके कुछ सुपरवाइजरी फंक्शंस होते हैं. देखो सुपरवाइजरी फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, सुपरवाइज करने का मतलब क्या होता है कि देखना, अपने से नीचे बेल्ट को देखना. सो इट इज हैविंग सर्टेन सुपरवाइजरी फंक्शंस आल्सो. फॉर एग्जांपल, to supervise the work of gram panchayat in the block. फिर है to scrutinize the budgets of the panchayats and to make suitable modifications in it. Next point is to check the work of the BDO. BDO stands for, yes children, type the answer for BDO. Full form of BDO. Write it fast. Yes children, my question is the full form of BDO. Type the answer fast.
See, to check the work of the BDO and his assistants. Next point is to draw plans for the development. To draw plans for the development of the block in coordination with the development plans of panchayats of the block. For this purpose, it provides the services of the experts. Yes, only one child has given the correct answer. Only she has given. Charu has sent the answer. The full form is Block Development Officer. So now, it is having certain other functions also. This Panchayat Samiti is having some other functions also, and these functions are known by the name of delegated functions. Now, इसमें कौन से points आते हैं? To arrange funds from the government for various activities noted above. Second point is to carry out the integrated rural development program. Integrated rural development program. Now, what is this? This stands for rural integrated development programs, means that the state government or the central government gives several directions of the district boards issued to the block panchayat samiti, and from time to time these instructions are given. Now children, the next point is जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, that what are the sources of income of this पंचायत समिति. इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सबसे ज़रूरी पॉइंट देखो, जो ब्लॉक समिति है, द ब्लॉक समिति गेट्स इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स, taxes levied by it, a fixed percentage of land revenue, sales and rents of the property, contribution from the gram panchayats. ये सारे इसके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं. अब हम लोग बात करते हैं बच्चों जिला परिषद की. देखो, जिला इंग्लिश में हम लोग जिले को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट. सो सिंपल इट इज जिला परिषद at the district level. So सबसे पहले हम इसकी composition की बात करेंगे. Let's talk about the composition. See, the highest body in the 3-tier system of Panchayati Raj is जिला परिषद. जो highest body है 3-tier system की पंचायती राज की, वो है जिला परिषद. और in short we can say third tier of the जिला परिषद is the third tier of Panchayati Raj. It is a link between the gram panchayats and the state government. It is a link between the gram panchayats and the state government. It consists of the following members. सबसे पहला, presidents of the block samitis in the district. जितने भी ब्लॉक समिति हैं, जितने भी उन ब्लॉक समिति के जो भी प्रेसिडेंट हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, वो सब इसके मेंबर रहेंगे. जितने भी एमपी एमएलए हैं, एमपीज एंड एमएलएज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट. थर्ड पॉइंट, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जो भी डेप्यूटी कमिश्नर होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो भी जिला परिषद का मेंबर है. हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी के एचओडीज. एचओडीज स्टैंड फॉर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. देन चेयरमैन ऑफ द एरिया पंचायत्स इन द डिस्ट्रिक्ट. जितने भी चेयरमैन होते हैं एरिया पंचायत के उस जिले के, ये सब इसके मेंबर होंगे. वन रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. देन चेयरमैन हो या मेयर हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, म्युनिसिपल कमेटी का जो भी हेड होगा, मेयर होगा या चेयरमैन होगा, दोनों लोग, चेयरमैन कह लो या मेयर कह लो, वो भी इसका मेंबर होगा.
अगर हम लोग ऑफिस बेयरर्स की बात करें, द जिला परिषद हैज अ चेयरमैन and a deputy chairman elected from amongst its own members. He presides over Jila Parishad meetings and conduct its proceedings. He is elected for 5 years term. इनका जो सिलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है. Just remember this point. The Jila Parishad has one chairman and one deputy chairman, and they are elected from among its own members, and the time duration is of 5 years. अगला पॉइंट हमारा फंक्शंस के. क्या फंक्शंस होते हैं इस जिला परिषद के? देखो, द फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हर स्टेट के अलग अलग होते हैं. जिला परिषद के जो फंक्शंस होते हैं, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इट्स वर्क एज अ सुपरवाइजरी, और लगभग सारे स्टेट्स में ये सुपरवाइजरी का काम करते हैं. सुपरवाइजरी का मतलब होता है अपने से नीचे डिपार्टमेंट्स को देखना. एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, जो इसके मेन फंक्शन है, पहला, इट गिव्स डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस टू द पंचायत समिति. नेक्स्ट, इट कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट प्लान्स prepared by the Panchayat Samiti. It scrutinizes the budget of all the local bodies in the district and recommend grants for those local bodies. It takes care of the primary, secondary, senior secondary schools, libraries, dispensaries, hospitals, primary health centers, maternity and child welfare centers in the areas of the Panchayat Samitis. इसके बाद it takes steps to improve agricultural production. सबसे ज़रूरी काम इसका क्या होता है? ये agricultural production पे, खेती की बढ़ोतरी कैसे हो, फसल की बढ़ोतरी कैसी हो, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है. Sanitation पे, ponds and roads कंस्ट्रक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, इन सारी एरियाज में ये काम करती है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान्स एंड द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जिला परिषद. इट ट्राइज टू डेवलप लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एरिया. Next point is, it provides relief in times of distress, drought and scarcity. It means अगर सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या फसल की कमी हो जाती है, तो जो जिला परिषद होता है वो उसमें सहायता देता है. To promote the welfare of the weaker sections, जो भी weaker sections हैं, ये उसको welfare provide करता है. It advises the state government regarding the needs of the people of the rural areas. ध्यान देना बच्चों, it advises the state government, ये state government को भी सलाह देता है regarding the needs of the people of rural areas. My next point is Jila Parishad Committee. See, the Jila Parishad functions through standing committees elected by its members. Some of the committees are committees on education, social welfare, development, function committee, public works and finance committee. इसके बाद है, अगला पॉइंट है मेरा सोर्सेज ऑफ इनकम. इसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द जिला परिषद? सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स. ओके चिल्ड्रन, टेल मी till here the topics are clear or not? Just answer me fast. Charu, Janvi, Nikhil, Shubhi, दिव्यांशु, अदिति, साक्षी.
Till here the topics are clear to you or not, children? Okay. So only Janvi has responded. Where is Charu? Where is Shubhi Yadav? Nikhil? Sakshi Bajpai? All the candidates. I need the response from you all. The topics are clear or not? Okay. Now the next point. See, firstly, let's talk about sources of income. जिला परिषद के source of income क्या होते हैं? सबसे पहला गवर्नमेंट ग्रांट्स, दूसरा रेंट फ्रॉम जिला परिषद प्रॉपर्टी, जो जिला परिषद की प्रॉपर्टी होती है उससे जो किराया मिलता है, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, फेयर्स, एग्जीबिशंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट, शेयर इन लैंड रेवेन्यू, एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइसेंस फी. अब हम लोग बात करते हैं. But children, there are certain limitations also. There are certain limitations also on this पंचायती राज systems. कुछ limitations भी होती हैं इस पंचायती राज पे, उस पे हम लोग बात करें. The पंचायती राज system is riddled with factionalism, bigotry, family feuds and blind faith in outdated customs. सबसे जरूरी पॉइंट, मनी रिमेंबर द पॉइंट, मनी एंड मसल पावर टर्न इलेक्शन रिजल्ट्स इन देयर फेवर. Money and muscle power turn their election results in their favor by the influential people. जो लोग पैसे से मजबूत होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, वो लोग आसानी से चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि वो पैसे का भी खर्चा करते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चुनाव का नतीजा बदल देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लो लिटरेसी रेट in spite of sustained steps that have been taken for the cause of education, like the right to education and provisions for free and compulsory education till the age of 14 years. Next point is, in spite of seats reserved for women still do not have the position of equality. They are not given effective power. Our villages still have a patriarchal setup in which women find it difficult to assert their rights. अभी भी फीमेल जीत जाती हैं लेकिन जो रूल करता है वो उसका हस्बैंड होता है. मतलब जो गांव की प्रधान है या जो भी अधिकारी हैं, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, उसमें जीती महिला है लेकिन जो रूलिंग होती है दैट इज बाय her husband. Next point is communal trend in various voting do not bring the right people. देखो कई जगहों पे क्या होता है, जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से चुनाव होते हैं. So communal trend in voting do not bring the right people to fill up positions in local bodies. Now children, the next point is evaluation or achievements of the panchayati raj. Last point है हमारा evaluation or achievements of the panchayati raj system. सबसे पहले मैं बात करता हूँ. The panchayati raj has many achievements to its credit. सबसे पहला, introduction of self government at local level made people self-confident and improved the quality of their lives. People have become aware of their rights and duties to a great extent. The government on its part has introduced, देखो दूसरी तरफ सरकार ने कई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं. The government on its part has introduced various projects and schemes for inclusive growth and to make democracy meaningful. कुछ important programs हैं
जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किए थे, इनिशिएट किए थे. सम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स initiated by the governments are Jawahar Gram Samriddhi Yojana for rural development and Gram Swarojgar Yojana for self-employment. National Employment Guarantee Scheme, now known as महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा, MNREGA, provided to every rural household 100 days of employment in a year. 100 days का मतलब हो गया करीब 3.25 महीना, लगभग 3.25 महीना इन लोग को काम मिलेगा और वो कंपलसरी होता है. इसके बाद बच्चों जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था, the 73rd amendment has given constitutional status to the Panchayati Raj system and takes forward the agenda of depending democracy. देखो डेट याद रखना, 24th April has been declared as the National Panchayati Raj Day. Remember the date? 24th April has been declared as the National Panchayati Raj Day. जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, he emphasized that the facilities and services in rural areas should be at par with the cities. The Prime Minister exhorted the Panchayat representatives to use their tenure to work towards serving the people. देखो प्रधानमंत्री का कहना यह था कि जो भी पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो आपका सरपंच हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख है, जो भी है, वो अगर 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए जीतते हैं, तो 5 साल वो अपने गांव को या अपना जो भी उनका ट्राइब है, कस्बा है, उसकी तरक्की के लिए काम करें कि लोगों में बदलाव आए, जो गांव है वो और ज़्यादा तरक्की करें. In particular, he said, women members can play a leadership role in areas such as toilet construction. He urged the panchayat to pay spinal attention to children's education and said, if children stop attending schools, it should worry for the panchayat members. देखो इस पर ध्यान देना. तो गांव में जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों की जो जनसंख्या होती है स्कूलों में, बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं. तो ये जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है कि आपके गांव में बच्चे जो हैं अधिक से अधिक आएं. दैट मोर एंड मोर चिल्ड्रन शुड बी कमिंग टू योर स्कूल. अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आएं जिससे कि बच्चे पढ़ें. ओके, अगला पॉइंट. देखो अब इससे देखो क्या होगा. अगर गांव के सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, गांव में बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर लेते हैं, तो उससे जनता का ही भला है, उस गांव का भला है, उस परिवार का भला है. द प्राइम मिनिस्टर एनकरेज्ड पंचायत टू थिंक बियॉन्ड बजट्स एंड फोकस ऑन जन सुविधा. ये उन्होंने पॉइंट्स दिए थे. And children, for your test, all the 5 chapters of civics. अगर आप लोग का जो अगले हफ्ते जो टेस्ट होने वाला है, जो मल्टीपल चॉइस वाला होता है, उसमें 5 चैप्टर्स में सिविक्स के दूंगा, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5. हमने आज 5वां खत्म कर लिया है, इस चैप्टर को मैं डालूंगा. जस्ट सेंड योर यस फास्ट. किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो मेंशन करो. आई नीड योर रिस्पॉन्स चिल्ड्रन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक. अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा
क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, now the questions are related to civics। सबसे पहला, explain the term local self government। local self government क्या होती है? You now send me the answer of explain the term local self government। चारू, शुभी, जानवी, निखिल, Aditi, Sakshi, Divyanshu, all the children respond। I've asked you the question also, explain the term local self-government। Give me the answer of the question which is printed. Explain the term local self-government। Yes, local government means administration of a locality of officials appointed by the government। Yes, right answer, good। Good, Charu, your answer is correct। Or in other terms, if I say the answer, local self-government means administration of or looking after a locality by the residents of the locality themselves। Next question, name any two। My next question is, the answer is here, it means administration of or looking after a locality by the residents of the locality themselves। Now the next question. My next question is soon visible, would be soon visible on your screen. Name the committee that recommended the establishment of three-tier system of Panchayati Raj institutions। Yes, children, give me the answer fast। Yes, correct answer. The correct answer is Balwant Rai Mehta Committee। Good. Okay, the correct answer is Balwant Rai Mehta Committee। Now the next question. Define the term Gram Sabha। Define the term Gram Sabha।
Yes, children, type the answer fast. Okay, the correct answer for the Gram Sabha is Gram Sabha is a sort of village assembly. Remember, children, Gram Sabha is a sort of village assembly. It is a meeting of all adults who live in the areas covered by a panchayat. Anyone living in the area who is an adult, that is 18 years old or more, form the ग्राम सभा. मतलब उस गांव में जितने भी रहने वाले लोग हैं जिनकी उम्र जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर्स में आते हैं. याद रखना एज, ऑल द एडल्ट मेंबर्स मीन्स जिनकी एज 18 ईयर्स हैं, ऑल दैट कम इन द लिस्ट ऑफ ग्राम सभा मेंबर्स. Now, the next question, you can see the answer. It is a sort of village assembly. It is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. Now, the next question. Mention any two important functions of the Gram Sabha. Mention any two important functions of the Gram Sabha. Answer it fast. Mention any two important functions of the Gram Sabha. Okay. Now children, I am going to tell you the answer. The two important functions of the Gram Sabha is, first one, it elects the members of the Gram Panchayat, first point. Second point is, it approves the budget for the year. The important point, it approves the budget for the year. And the second point is, it elects the members of the Gram Panchayat. You can see the answer on your screen. It would be soon visible. Okay, children, my next question. Right answer, Charu. My next question. How has the Constitution ensured the participation of SCs and STs and women in local self-government? Yes, children, answer the question. How has the Constitution ensured the participation
of SC, STs and women in local self-government? Okay, so children, I am telling you the answer for this question. The answer for this question is the Constitution has ensured the participation of STs and SC, STs and women by reserving seats for them in the local body elections. इन सब के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं. अगला सवाल, what is a न्याय पंचायत? The last question for today, what is a न्याय पंचायत? Yes, children, answer this question fast. What is the न्याय पंचायत? Okay, I tell you the answer, children. The answer for this question is some states have separate judicial panchayats. It looks into civil and minor criminal cases and can only impose fine. Again, I am repeating my line. Question is, what is a न्याय panchayat? The answer is, some states have separate judicial panchayats. It looks into civil and minor criminal cases and can only impose fine. It cannot give any kind of punishment. It can only it can only impose fines. So that's all for children. That's all for today. And in the next week, whenever I'll be having the first class, I'll be taking an open session for the civics chapter, and in your test you will be getting the first 5 chapters